So previous class रे ଆମେ ପଢିଥିଲେ ଗୋଟେ zone axis. Okay, आज ଆମେ start କରିବା crystal symmetry. So what is crystal symmetry? So simply कहବାକୁ गले symmetry is the similarities between different parts of the crystal. ଗୋଟେ particular crystal ର different part କୁ ତମେ କେମିତି similarities show କରୁଛ ତାକୁ crystal symmetry କୁହାଯାଏ. So ଯେହେତୁ crystal is a repetitive unit, ତାମାନେ first unit cell ତିଆରି ହୁଏ, unit cell ତାପରେ repeat ହେଇକି formation କରେ ଗୋଟେ crystal. जेहेतु it is a repetitive unit, so there is similarities between different parts of the crystal, between different garments वगैरह देखो garments से कौन थे गोटे particular कि जेकोसी गोटे फूल हो कि जहाँ भी हो तार थाए कि गोटे particular picture थाए सेटा particularly throughout the garment को repeat होता है bedsheet वगैरह देखो सब कौन repeat है यदि कौनसी जिनस repeatedly formation हेती ताले ताको भितर तुमे similarities show करे पाए. Because of repetition, the crystal will show various types of symmetry within it. So what are the different types of symmetry? So crystals, they have always show a ordered arrangement. They show a ordered arrangement. So because of this ordered internal arrangement, it shows symmetry. So there are 7 types of symmetry. One is your translation, then another is your mirror, your plane of symmetry, then rotation, axis of symmetry, another is inversion, inversion of center of symmetry, then your roto inversion, glide plane, skew axis. So these are the 7 types of symmetry operation that can be represented within a crystal. So it can be categorized into different groups. What group देखिए हमें what comes to the fixed or point symmetry. To show symmetry, we don't have to move or translate any point. कौन सी point भी तुमको translate करने को पड़ेगा नहीं. Symmetry show करेगा. केमिति translation हुए से काम में पढ़ने जाने पड़ेगा. तो पर ना हम जानते हैं कि fixed symmetry. So mirror, rotation, inversion, roto inversion, those are fixed symmetry. A symmetry translation operation is not involved. Translational symmetry, तीन प्रकार आसो गोटे translational symmetry कहते गोटे glide plane कहते गोटे skew axis. So fixed or point symmetry operation आसो कौन mirror, rotation, inversion, roto inversion. Translation symmetry आसो translation, glide plane और skew axis. So fixed or point symmetry और translation symmetry भितर difference जानिबार. Another way we can also classify symmetry operation. One is simple symmetry, another is your combined symmetry. देवस्मिता कौन कहते हैं कि डाउट होची another way हम करि परिया गोटे simple symmetry और गोटे combined symmetry. So simple symmetry होची जो symmetry operation is single operation. तो हमें translation कहती mirror हो plane of symmetry, rotation हो कौन rotational symmetry, inversion हो center of symmetry. Those are single symmetry operations. So that's why it is called as a simple symmetry operation. Another one is your combined symmetry operation, which is a combination of two simple operations.
There is a roto inversion, which is the combination of rotation and inversion. Then screw axis, it is the combination of rotation plus translation. Then glide plane, it is the translation plus mirror. The roto inversion, screw axis, glide plane, those are combined symmetry. So combined symmetry जो आछंती all are, you can say, translational symmetry. Sorry, all are not. कि roto inversion छाड़देले screw axis और glide plane होचे कौन translation. तो हमें first देखिवा what is a translation. Translation word हम कौन एंड करछंती कि किसी जिनिस हमें ट्रांसलेट करूछंती बा मूव करूछंती टू शो सिमेट्री. So translation meaning होची कि when something has undergone movement or shift or slide in a specified direction to a specified distance without any rotation or reflection. गोटे पॉइंट अच्छी हम इमेजिनरी पॉइंट गोटे नवा ताको गोटे डायरेक्शन रे हमें मूव करे. गोटे डायरेक्शन हमें मूव करे. From this point to this point in a particular direction to move करेगा, it is called as a translation. So translation केम करा जाए? We have to move imaginary points in specified directions at the specified amount always. तब मैं इतनी चीज़ को translate करूँगी this point in this direction at this much amount. This will translate in this direction at this much amount. Then again this will translate in same direction and same amount. That is called as translation. तुम्हें जब छिड़ा जो गोटे जगह गोटे पाद आगु गल माने जो डायरेक्शन में जाइछो सेही डायरेक्शन में आ गोटे गोटे पाद आगु गले ताको ट्रांसलेशन कहते. तुम्हें डायरेक्शन चेंज करिवो कि तुम्हें गोटे पाद रु दी पाद कोन जगह नबो, that is not considered as your translation. So translation always involves shifting of points, or you can say moving of points through a specified direction with a specified amount. से बात तुम्हें जो रिपीट करियो तो मैं एमती सिमेट्री शो कर परिबो दिस पार्ट एंड दिस पार्ट ठीक मजरू दी भाग हे गला. जतरा हम ट्रांसलेशन करूछंती थ्रू ट्रांसलेशन वी कैन शो सिमेट्री. अंडरस्टूड? बुझि पाछना बुझि पाना को जोटा कहला तुम्हारा distance between points within the figure will not change. तुम गोटे पॉइंट को जो डायरेक्शन में मूव करेछो जति के अमाउंट रे मूव करछो तुम जते पर्यंत ट्रांसलेट करो तो सेति के अमाउंट और से डायरेक्शन को तुम जते जाले कांस्टेंट रखिया पड़े. जब तुम चेंज कला ताले इट विल नॉट कंसीडर एज ट्रांसलेशन. Suppose we got a point to it, then I will translate this part here, then again I will change here, then again here. That is not considered as a translation. So translation different direction नहीं परियो and different amount रे भी different direction नहीं परियो, but जो direction है जति का amount होगा सही direction है से amount सब बड़े constant है. So translation गोटे point को पा गोटे कौन सी भी imaginary point तो मैंने हम तक motif कहते हैं. motif कहते नॉर्मली हम जनरल से imaginary point को crystallography रे motif कहते. So जे कौन सी गोटे motif बा point को हमें गोटे डायरेक्शन में शिफ्ट करि परिबा, नले तीनटा डायरेक्शन में शिफ्ट करि परिबा, नले तीनटा डायरेक्शन में शिफ्ट करि परिबा. यदि गोटे पॉइंट अछि हम गोटे डायरेक्शन में शिफ्ट करि परिबा ओनली दिस डायरेक्शन.
सो मु चाहिले ताको दीटा डायरेक्शन शिफ्ट कर परिबे ए डायरेक्शन आउ ए डायरेक्शन चाहिले तो तीनटा डायरेक्शन शिफ्ट कर परिबे देन आउट थर्ड डायरेक्शन होची इन द वर्टिकल प्लेन यदि गोटे डायरेक्शन में शिफ्ट करा जाए इट इज कॉल्ड द ट्रांसलेशन इन 1D तो ट्रांसलेशन 1D रे किसी भी प्रोड्यूस हुई so because crystal is a 3D structure so framework will produce by 2D then a third operation will be your 3D so simply 1D रे किछि होबन जहां हमर आछो ट्रांसलेशन इन टू डायरेक्शन जे दीटा डायरेक्शन हम ट्रांसलेट करू छथि ताले डिफरेंट वे रे ट्रांसलेट कर परियो तमे ए डायरेक्शन रे जति अमाउंट ट्रांसलेट करू छ ए डायरेक्शन रे सेति की करि पारो न भी करि पारो हला किंतु ए डायरेक्शन रे जति की करि जो तो बळे सेति की रहबो ए डायरेक्शन रे जति करतो सब बळे सेति की रहबो जो डायरेक्शन में तुम ट्रांसलेट करो जो डायरेक्शन में ट्रांसलेट करो एंड नेक्स्ट डायरेक्शन में जेती की एंगल रखी ट्रांसलेट करो दैट विल आल्सो रिमेन कांस्टेंट इंद्रला तुम्हें चाहिले एबड़ा कर परियो तुम जो बड़ा तुम ट्रांसलेट करियो दैट विल रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द ऑपरेशन जब ट्रांसलेशन वन रे को गोटे प्रकार हम कर परियो बट जब हम 2D देखिबा so we can translate it in various way so when two dimension translate करते it will produce a plane lattice এটা को प्रोड्यूस करो plane lattice it will produce a network of points like this what we call a plane lattice हम तको बोल plane lattice को तुम्हें यदि motif को two direction रे move करेगा then it will produce a plane lattice এটা को प्रोड्यूस करो plane lattice प्रोड्यूस करेगा so there are five types of plane lattice there are plane lattices there are five types of plane lattice depending upon the translation variation in two direction so dita direction e kemiti ba kete amount translate korcho and what is the angle between the two translational direction dita translation direction ne kete angle rohuchi and dita translation direction tame kete amount translate korucha se anusare we have five types of plane lattice यदि फास्ट हमें देखिबा एठी it is translating in this direction and in this direction a direction जति ट्रांसलेट करछि एते अलगा ट्रांसलेट करछि अलगा अमाउंट रा तांको त एंगल भी किछि लेस देन 90 डिग्री अछि एठी हमें देखिले ए डायरेक्शन जति करछि ए डायरेक्शन जति ट्रांसलेट करछि एठु तारा अलगा अमाउंट रा ट्रांसलेट करछि but तांको त एंगल केते रहछि 90 डिग्री रहछि जदि एबरा देखिया हमें both direction is equal translate करछि and the angle between them will is 90 degree तो एबरा तुम्हारा डिफरेंट शेप और साइज से प्रोड्यूस करिवो लैटिस तब हम कहन कोन प्लेन लैटिस so first one is your clinonet जो कि the translation vector in two direction will be different will be unequal angle between them can be anything like from 0 to 90 degree our one orthonet which the translation vector in two direction will be unequal but the angle between them will be 90 degree the hexanet the translation in both direction will be same but the angle between them will be 60 degree angle between them is 60 degree then your diamond net the direction the translation vector in two direction will be equal but the angle between them can be anything what we call general angle it is जोड़ा हम कोई मेरा general angle 0 to 90 जहाँ भी it is सेवा कोई हमें general angle so it is called the diamond net then square net obviously translation will be equal in both direction dita direction equal hobo and the angle between them will be 90 degree so it is a square net बुझिपाला समझते
एटा को लिखि दियो हला डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैटिस जोटी फास्ट तुम्हारा क्लाइडोनेट जोटा शेप होछ कोन पैरेललोग्राम शेप रास्ला तापर जोटा रेक्टेंगल दैट इज होची ऑर्थोनेट डायमंड शेप रास्ला ताको डायमंड नेट कहंती जोटा रंबस शेप रास्ला ताको हेक्सानेट कहंती जोटा स्क्वायर शेप रास्ला स्क्वायर नेट कहंती and this is the magnitude of different vector and translation in both direction diagram টা এটাও লিখে দিই these are your five types of plane lattice declinonate orthonate diamondate hexanate squarenate যদি translation দুইটা direction এ হলা তাহলে it will not produce a crystal so translation should be in three direction to produce a crystal so if you will translate in third direction then what will happen so now suppose this is a motif it is translating in this direction and in this direction and a third direction like this so each point or motif now will translate in three direction so when it will translate in three direction it will produce a 3D lattice it will produce a 3D lattice what we called space lattice or you can say crystal lattice तो हमें स्पेस लैटिस कहबा क्रिस्टल लैटिस कहबा 3D लैटिस कहबा and the first form space lattice that is called as a unit cell ता कोन कहै छै unit cell कहै छै so this is the building unit of the crystal गोटे यूनिट सेल तैयारी हेले तापरे it will repeat itself to form a complete crystal you can take the example of a Rubik cube रे देखो छोटो छोटो क्यूब गुना जोडी एक भाबे जे बड़टा तैयारी करछ तो हमें a unit cell को it will stacked in a way that it will produce a complete crystal जो बात unit cell होची is the building unit of crystal you can take the example कि में घरर कांथ हो कि कोनोसी घर हो तार बिल्डिंग यूनिट यूज को आइदर इटा हबो नले पत्थर हबो तो से माने कोन निजो को रिपीट करछन बा तुमे मल्टीपल इटा थरे यूज करछो ताको हम कहि परिबा कि से माने निजो को रिपीट करछन टू फॉर्म ए हाउस और समथिंग जहां भी हो कंस्ट्रक्शन में इटा को यूज करछो एज ए बिल्डिंग यूनिट इट इज अ यूनिट सेल को हम यूज करि परिबा एज बिल्डिंग यूनिट सो यूनिट सेल इज अ बिल्डिंग यूनिट ऑफ ए क्रिस्टल So these unit cell can be formed by taking points at the corner or you can also construct a unit cell by taking other places in this unit cell. The meaning को हमरा देखियो हमें समझ आया है So this is suppose a plane lattice. Okay. So we can construct this square type of plane lattice by taking points at the corner of the lattice. Only corner of the lattice है हमें point नहीं तैयारी करना but we can also construct this type of lattice or this square lattice by taking point at the center of each lattice. So if you take point at the center of each lattice, you also produce the same square lattice. Now this
lattice where it is forming by taking point at the corner. जोठी हमें point corner रे नहीं create करछन सी हो जोला उठे lattice create होछ center भी point देले सी भी सेवला lattice करे. So these are two different types of lattice. Different types of lattice. It is the same square lattice, but the point of origin on what places we are taking points, it will be two types. The square lattice will be two types. One is by taking point at the corner, one is taking point at the center of the each lattice. So accordingly, unit cell also can be produced in different ways. Here we are taking point at the corner, we can also take point at the center, and if we take point centers of different you can say unit cell, if you join them they will produce the same unit cell like this. If they will produce, then we'll say this is also a type of lattice that can be produced by taking point at the center. So depending upon on what places we are taking points to construct a lattice or to construct a unit cell, the unit cell are classified into two types. Go point from division is answer unit cell to दीटा type रा division कराए. तो ये जो जिनसा ना कहले बुझ पाला ना बुझ पाले ना केमती different point नहीं क्लियर होछ. तो So there are two types of your unit cell. One we call primitive, and other is called as a centered unit cell. One is called as a primitive unit cell, another is called as a centered unit cell. When for any unit cell that form by taking points only at the corner, that is called as a primitive unit cell. So when constituent particles, जो हमें point कहते हैं node कहते हैं, they are actually ions or atoms. Okay, there are actually ion and atoms. So when constituent particles, जो ion or atom, present only at the corner position of a unit cell, exactly it will be like this, where only corner पे हमारा atom or ion or points are present. So ये वाला है इटा कौन primitive. So when a unit cell has only point or constituent particles at the corner of the unit cell, it is called as a primitive. If a unit cell contains one or more constituent particle other than the corner position रे भी थिबो ता सहित additionally आ गोटे पॉइंट कोड थिबो ताल ताकू कोनती कोन centered unit cell. So when a unit cell contains one or more constituent particle present at the position other than the corner, हमारे corner रे अछि सब, so it is only primitive. Suppose I will take another point at the center of each unit cell. At the center of each unit cell, then it will be called as centered unit cell. So depending upon on what position we are taking at the additional points or at what position the additional constituent are present, वो point रे additional constituent पूरा present अछंती, ताकि नहीं कि centered unit cell is classified into three types. Centered unit cell तीनटा type पर division ହେଇची. गोटे कहते हैं body centered unit cell. Body centered unit cell. So body centered unit cell ले कौन तुम्हारा corner रे point present है as well as center रे point present है. तो यदि corner रे point present थिबो, each corner रे point present थिबो, ताले one point it will shared by other lattice. It will shared by other lattice.
suppose for an example suppose this is a lattice. এই পয়েন্ট আমি দেখিবা মঝি পয়েন্ট ये जो पॉइंट अछि ये यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट करूछि याको कंट्रीब्यूट करूछि याको कंट्रीब्यूट करूछि याको कंट्रीब्यूट ताले ये जदि देखिबा ताले ईच लैटिस को निजर केते भाग दो यदि ये कंप्लीटली वन वे ताले एठी की किछ पार्ट जाउछि एठी किछ पार्ट जाउछि एठी किछ पार्ट जाउछि एठी तमर निजर 1/4 पार्ट 1/4 पार्ट एठी रहउछि 1/4 पार्ट आको contribute करछु 1/4 पार्ट आको कंट्रीब्यूट करछु so each point at the corner in a plane lattice it will contribute 1/4 part to a lattice यदि हम 3D रे देखिबा तो each point in unit cell रे जोगरा corner रे था unit cell रे जोगरा corner रे थांती they will contribute 1/8 part to a unit cell. गोटे unit cell को से निजरा 1/8 part ये भी गोटे constituent particle corner हुए ये आपको 1/8 part दिए then another unit cell लगता है जिनकी आवरी 8टा unit cell लगता है गोटे corner particle ने कितना unit cell join होता है 8टा unit cell join होता है and each को से 1/8 part निजरा दिए and if it is present in the center then it will be whole within the unit cell. If it has a center then one unit cell will be one constituent particle will be in one unit cell. So in a body center, so points are present at the corner and as well as at the center of the unit cell. In face center unit cell, points are present at the corner as well as at the each face of the unit cell. So corner point present है ता सहित faces रे भी थाए सब फेस रे तोमर प्रेजेंट थिबा एडिशनल कंस्टिट्यूएंट पॉइंट्स यदि फेस रे रहला ताले वन यूनिट सेल विल बी वन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल विल शेयर हाफ ऑफ इट्स पार्ट टू वन यूनिट सेल गोटे यूनिट सेल यदि रहला एट द फेस रे यदि पॉइंट रहला ताले से गोटे यूनिट सेल को निजर हाफ कंट्रीब्यूट करे also end center of face है but only at the opposite faces तो सब बड़े मन रखबो कॉर्नर रे पॉइंट रहबो जते जाले जे कोन यूनिट सेल हो तुम्हार पॉइंट्स मस्ट बी प्रेजेंट एट द कॉर्नर देन एडिशनल पॉइंट को जदी से अनुसार डिफरेंट यूनिट सेल आसे गुडे से बॉडी सेंटर रे प्रिमिटिव कॉर्नर रे पॉइंट हो ता सहित सेंटर रे पॉइंट हो तासे फेस सेंटर कॉर्नर रे पॉइंट हो ता सहित ईच फेस रे थिबो तापरे end center आसो कॉर्नर रे पॉइंट हो ता सहित अपोजिट फेसेस रे 8 corner होउची कोत रे प्रिमिटिव रे 8 corner रे तो लैटिस पॉइंट थांती ईच corner रे गोटे पॉइंट रो 1/8 पार्ट थाए यदि corner रे पॉइंट रहला ताले कंप्लीटली इट विल बी ओनली वन पॉइंट बोली कंसीडर करा जेबा वन एटम बोली कंसीडर करा यदि बॉडी सेंटर रे तुम 8 corner रहबे each corner रे 8 corner रहले दैट विल बी 1 एंड बॉडी सेंटर रे गोटे रहले दैट इज विल बी 1 कैन गोटे बॉडी सेंटर रे गोटे कंप्लीटली एटम रहले टोटल 2
सो टोटल तुमरा प्रिमिटिव रे 1 पॉइंट रहबा 1 एटम रहबो तुमरा बीसीसी जोरा को हम कहंती आई हला बॉडी सेंटर रे रहबा 3टा पॉइंट दीटा आटम फेस सेंटर रे आठटा कर्नर रे गोटे मिसी की ईच फेस रे तुमरा हाफ रहबा तो 6टा फेस रे केतरा तीनटा टोटल मिसी चारिटा पॉइंट आछो देन 4 होची तुमरा अपोजिट फेसेस रे रहबा आठटा कर्नर रे गोटे टू सेंटर रे अपोजिट फेसेस रे से मिसी की गोटे टोटल दीटा आटम रे तो जदि प्रिमिटिव होची तुमरा गोटे आटम थाए प्रिमिटिव यूनिट सेल रे बॉडी सेंटर ताको सिंबलाइज करा जाय आई रे तो दीटा आटम थाए फेस सेंटर रे चारिटा आटम थाए एंड एंड सेंटर रे दीटा बुझ पाइला जदि केमि आटम गुरा हिसाब करा जानि पाछो ना जानि पानो तबरे डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल भी हे परिबो खाली तमे देखु से करा सब क्यूबिक शेप रा अछि और डिफरेंट शेप रे यूनिट सेल हे परिबो बाय टेकिंग पॉइंट कॉर्नर्स और सेंटर्स तमे दि क्यूब देखिबा ताल क्यूब होची इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ आइसोमेट्रिक सिस्टम और कैरेक्टरिस्टिक যদি কিউব শেপের ইউনিট সেল রে তাহলে or it can be constructed by taking point at the corners, it can be constructed by taking point at the center, or it can be constructed by taking point at the faces. ସେଥିପାଇଁ ତମର cubic system the unit cell can be primitive, can be body centered, can be face centered. बुझिपाला so cubic shape ର crystal तुम्हारा primitive रे ही परिबो body centered ही परिबो face centered ही परिबो but if you take point at opposite faces only it cannot form a cubic crystal a cubic crystal produce कर परिबो नहीं so different unit cell तुम्हें पढ़िला so different crystal system से different type of unit cell produce so that is called as Bravais lattice or you can say 14 types of Bravais lattice. The primitive body centered and face centered होची तुमर कोठ हवा cubic case যদি সেটা টেট্রাগোনাল হয়ে যায় টেট্রাগোনাল শেপ র তো টেট্রাগোনাল यूनिट सेल primitive রে प्रोड्यूस हे परिबो and it can produce by body center so ये फेस रे पॉइंट तो मैं नबो ताको जॉइन करले it will not produce a tetragonal unit cell so body centered and primitive. Then orthorhombic can be produced by taking any type of points. Two type of model. So primitive रे ही परिबो, body center रे ही परिबो, face center रे ही परिबो, end center रे सब type रे ही परिबो कोथरे. तुम्हारा orthorhombic case. monoclinic ही परिबो only body center and end center. Sorry, body center होची primitive and end center. primitive यूनिट सेल तयारी कर परिबो monoclinic रे ता सहित एंड सेंटर यूनिट सेल तयारी परिबो monoclinic triclinic रे you can only produce unit cell by taking point at the corner so it only primitive देखबा आ कोनसी टाइप ऑफ यूनिट सेल triclinic रे शो कर परिबो नै hexagonal is जितने भी पार्ट है हेक्सागोनल समझते प्रिमिटिव ही देखे जो ट्राइक्लिनिक का प्रिमिटिव हेक्सागोनल समझागा प्रिमिटिव या कौन सी टाइप ऑफ यूनिट सेल शो कर परिबा नहीं खाली गोटे स्पेशल ले जाए दैट इज रंबोहेड्रल ठीक है
तो ताको r द्वारा सिंबलाइज करते इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ लैटिस इट इज आल्सो ए प्रिमिटिव यानी एट देखो कॉर्नर रे ही खाली पॉइंट अछि आ कोन से जगह पॉइंट ना इट इज अ प्रिमिटिव बट इट इज स्पेशल वन दैट्स व्हाई इट इज rhombohedral तो गोटे एडिशनल लैटिस को जाय एटाको rhombohedral तो बुझ पाइला सो क्यूबिक रहला प्रिमिटिव बॉडी सेंटर फेस सेंटर टेट्रागोनल रहला प्रिमिटिव बॉडी सेंटर ऑर्थोरोमिक रे ऑल मोनोक्लिनिक रे रहला कोन प्रिमिटिव एंड सेंटर ट्राइक्लिनिक रे ऑल हेक्सागोनल ले प्रिमिटिव rhombohedral ले से प्रिमिटिव ताको आर को जाय तो जब जब काउंट करिवो इट विल बी 14 टाइम्स तो 14 टाइप्स है ना तुम्हें एटा खाता रे लिखो एटा आगे लिखो तब सेटा लिखो इट मोस्टली जिस्ट होची एटा तो पी माने प्रिमिटिव आई माने बॉडी सेंटर एफ माने फेस सेंटर ए बी सी जोटा कहछि एंड सेंटर को फेस रे अछि ए एक्सिस रे अछि बी एक्सिस रे सी एक्सिस so what is mirror it is otherwise called as plane of symmetry तो otherwise को कहै जाय plane of symmetry कहै जाय तो हमें गोटे imaginary mirror plane pass करबा through the center of the crystal and if it divides the crystal into two equal half then it is called as your mirror symmetry तो कौन हो जाए mirror symmetry को it is an imaginary plane और देखो हमें देखबा imaginary plane एटी पास करू छथि ताले crystal को दीटा equal half रे divide करछि then this will be considered as a mirror our important thing होछि the adjacent faces from the mirror plane must situated at equal distance at any point on the mirror plane যদি আমি কনসিডার করছি কি this is a mirror plane তাহলে mirror plane যে কোনসি পয়েন্ট তুমি গোটে পয়েন্ট ডিসাইড কর এন্ড adjacent সাইড কু जो फेसेस पूरा आछंती सो माने ए पॉइंट रु इक्वल डिस्टेंस रे थिबा दरकार ताल तो मिरर कंसीडर करियो तमे देखबा दी दिस इज ए मिरर प्लेन एटा कोन मिरर प्लेन ए मिरर प्लेन रो तुमर ए जो फेस और ए फेस सपोज धरो दिस राइट साइड फेस लेफ्ट साइड फेस मिरर प्लेन रो जे कोनोसी पॉइंट रो ये जति डिस्टेंस से पड़िबो ये सेति डिस्टेंस से पड़िया दरकार तापर ताको गोटे मिरर प्लेन बोली कंसीडर करा जाय नहले कंसीडर करा जीवा नै सपोज मैं एमती गोटे मिरर प्लेन के रिप्रेजेंट करछि तो ए पॉइंट रो ए फेस रे जति डिस्टेंस ए फेस रे ताको अधिक डिस्टेंस होछि अनइक्वल डिस्टेंस रे रहउछथि फ्रॉम द मिरर प्लेन सो इट विल नॉट कंसीडर एज ए मिरर प्लेन जते तुम्हार जेकोने जगह रे जदि फेस रो शेप रेक्टेंगल अछि ताले तुम मिरर प्लेन कंसीडर कर परिबनी डायगोनली कोन करो डायगोनली मिरर प्लेन कंसीडर कर परिबो ना बिकॉज़ इट इज a diagonal mirror symmetry maybe you can consider a mirror plane like this एबा तुम मिरर प्लेन कंसीडर कर परिबो इक्वि डिस्टेंस रहबे बट यू कैन नॉट कंसीडर मिरर प्लेन डायगोनल तो मिरर प्लेन तुम दीटा टाइप रो में डिवाइड कर परिबा कोन फोटो होची एक्सियल along the axis आ सब होची डायगोनल along the diagonal आपको सिंबलाइज करा जाए मन रखबो द स्मॉल लेटर एम रे मिरर प्लेन तो also रोटेशनल सिमेट्री को प्रति एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो कौन से क्रिस्टल को यदि एलोगन एक्सिस रोटेट करबा यदि से इट विल शो रिपीटेशन इन 360 डिग्री रोटेशन ताला हम ताको कोन रोटेशनल सिमेट्री बोली कि दैट एक्सिस possesses a rotational symmetry छोटा सेकंड में देखिए क्या क्रिस्टल आने देखिए माने मॉडल की स्कूल so rotational symmetry means you have to rotate the crystal about an axis
but axis through તમે rotate કર્યો, and if it will show repetition of faces in a 360 degree rotation, then we will call that axis has a axis of symmetry. That axis poses a axis of symmetry, and the number of repetition जते थर फेस रिपीट हो सेति की फोल्ड हिसाब तक रिप्रेजेंट करा. Suppose you are rotating a crystal above an axis and two faces will repeat, then that axis is called as a two-fold rotational axis. Two-fold, three-fold, four-fold, six-fold. One-fold is not the symmetry. From two-fold you will consider two-fold, three-fold, four-fold and six-fold. So that is called as your rotational symmetry. The angle of repetition, you can say it will be 360 degree by number of repetition of faces. तो केते थरा फेस ता रिपीट होगी 360 डे 360 डिग्री रे, तो 360 बाय नंबर ऑफ रिपीटेशन हो त तुमको एंगल ऑफ रिपीटेशन मिले कि 360 तुम्हारा नंबर ऑफ रिपीटेशन 2, तो जो 180 रे थारे गोटे फेस रिपीट हो. So these are the symbol. This is the rotation symbol. This is two-fold rotation symbol. This is three-fold rotation symbol. This is four-fold rotation symbol, and this is six-fold rotation symbol. बुझिपारा एटा होची रोटेशनल सिमेट्री. So we can represent it in a stereo diagram कि गोटे फेस रिप्रेजेंट हेची तार वन फोल्ड, यदि दीटा फेस रिप्रेजेंट हेजिबो इन 180 डिग्री तार टू फोल्ड, तीनटा फेस रिप्रेजेंट होची इन 120 डिग्री इंटरवल तार थ्री फोल्ड, चारटा हले कोन 90 डिग्री इंटरवल रे फेस आसीबो फोर फोल्ड, सिक्स फोल्ड को 60 डिग्री इंटरवल आसीबो. बुझिपाला. So तुम्हारा two-fold, three-fold, four-fold, six-fold is possible, but five-fold or more than eight-fold is not possible because that type of lattice is also not possible. Five-fold symmetry नहीं कि तुम्हें कौन सी construction completely close करी पड़े. Completely close न करें सिर्फ well developed भावने जोड़ा crystal का definition को follow करें. So एथिकल माना था कि lattice जो type of lattice possible में सही type of symmetry भी possible है ना. Symmetry depends upon the repetition of lattice. Thus, inversion will take a point within a crystal. But a point हमें उन्हें crystal within नगा. दो point through मोरा similar faces or edges or corner equal distance रे रही थी. तो एक ही जब ये तो point वाला नोचा. ये point through faces पूरा सब जगह equal distance रे थी. Edges पूरा equal distance थी and corners पूरा equal distance. ताले that will consider as your center of symmetry. that was simple as small I cube. जोड़ा तुम्हारा rotational symmetry गोटे crystal में many ही परिवो कि 2, 3, 4, 5 कितने number of rotational symmetry ही परिवो कि there are two axes of rotational symmetry कि four axes of rotational symmetry कि mirror plane can be कि 4, 5, but inversion is always either present or absent. Inversion कौन कहे either present or absent. आप कितने number ना था है ना, तो एरा कुछ कौन either present or absent. देखिए ना तुम्हारा simple symmetry operations हो. Translation, mirror, rotation, inversion. कुछ पहले आप इसको डाउट रहेला कार राज पढ़ाला